Priyal Jain, and before starting anything, I want to wish you all a very happy new year, and I'm very excited for this year. और मैं विश करती हूँ कि आप सभी के लिए भी ये ईयर बहुत अच्छा हो. जैसे मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए अच्छा है, वैसे ही आप सभी के लिए भी अच्छा हो. और आज का वीडियो होने वाला है ये मेकअप लुक, where I'm going to do this monochromatic brown makeup look. और ये monochromatic makeup look क्या होता है, ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा. And this video is going to be my first video of 2021 and I'm so happy. और ये खुशी को थोड़ा साइड में रखते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं. So let's get into the video. So guys, let's start with prepping up the skin, and for the moisturizer I'm going to use this Nivea Soft Light Moisturizer which has vitamin E. And as I have told you earlier also कि मुझे ये क्रीम बहुत अच्छा लगता है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ये आपको ऑयली टेक्सचर नहीं देता है. इसलिए मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगता है. और निविया के प्रोडक्ट्स खासकर मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ, मतलब पहले इन द सेंस बचपन से ही निविया के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव इट. सो मैं इस तरीके से मॉइस्चराइज़र को अपने फेस के ऑल अराउंड स्प्रेड करूँगी. एंड एज यू नो विंटर्स आर हियर और आपकी स्किन मॉइस्चराइज होना कितना इम्पॉर्टेंट है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज करना कितना इम्पॉर्टेंट है. सो लाइक दिस आई एम स्प्रेडिंग द मॉइस्चराइजर ऑल ओवर माई फेस एंड दैट्स इट. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस कलर बार फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर. एंड जो मैंने अभी अपना लास्ट मेकअप वीडियो किया था, शायद ये लास्ट टू लास्ट, जिसमें मैंने बताया था कि अपना विंटर में कैसे मेकअप करें. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. उसमें मैंने बोला था कि मैं प्राइमर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये प्राइमर एक आपको मैट फिनिश देता है. सो आई एम ओनली गोइंग टू अप्लाई दिस प्राइमर ऑन माई नोज क्योंकि ये एरिया बहुत ऑयली हो जाता है. एंड आई हैव अप्लाइड प्राइमर. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप. एंड एज यू नो आई एम गोइंग टू डू अ मोनोक्रोमैटिक लुक. सो जिन लोगों को नहीं पता है कि मोनोक्रोमैटिक मेकअप लुक क्या होता है, तो मोनोक्रोमैटिक मेकअप लुक वो होता है जहाँ पे आपके लिप्स का कलर, आपके चीक का कलर और आपके आई का कलर सेम होता है. मतलब आपका आई शेडो का शेड और आपके ब्लश का शेड और आपके लिप का शेड सेम होता है. सो आज मैं ये वाला लिपस्टिक अप्लाई करूंगी. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस नायका लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड चाय. और इसका शेड कुछ इस तरीके से दिखता है. सो इसी के मिलते जुलते शेड का हम आई मेकअप करेंगे. सो मैं पहले अपनी आई को प्राइम कर लेती हूँ जिससे हम ईजिली आई शेडो कर पाएँ. And for that, I'm going to use this Maybelline Age Rewind Concealer. I'm in the shade 20 Sand. Sorry, 122 Sand. So I am going to apply this concealer on my eyelid, and then with the help of a beauty blender, I'm just going to blend it. So guys, after priming the lids, let's start our eye makeup. और जैसे मैंने बोला कि लिप का कलर और आई का कलर सेम होना चाहिए, मतलब आई शेडो का कलर सेम होना चाहिए. तो उसके लिए हम अपनी लिपस्टिक से मिलता जुलता कलर लेंगे. एंड एज यू कैन सी कि ये वाली मेरी पैलेट में, ये पैलेट में मेरी ब्यूटी ग्लेज गॉर्जियस की पैलेट में ये वाला सेक्शन है जो वो मेरे लिप शेड से मैच हो रहा है. आप देख रहे हैं. तो हम ये वाला सेक्शन के कलर्स यूज करेंगे. और द फर्स्ट कलर व्हिच आई एम गोइंग टू टेक इज दिस लाइट ब्राउन शेड एज माय ट्रांजिशन शेड. द फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश जिससे मैं ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर सकूं. एंड आई एम टेकिंग द लाइट ब्राउन शेड एंड आई विल अप्लाई इट ऑन माय क्रीज शेड लाइक दिस. Now I'm going to take this blending brush and I'm blending the transition shade in a circular motion. जितना आप आई शेडो को ब्लेंड करेंगे उतना वो सॉफ्ट होगा और वो बहुत अच्छा लुक देगा. Now I'm going to take this shade, this dark brown shade which is a match to my lipstick. और अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हो सो गाइस सॉरी, मेरे घर के आसपास बहुत जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके कारण मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ. बट आज मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी ही है और अगर आप आवाज़ें आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. Now I'm going to take the dark brown shade on my fluffy brush, dusting off the excess, and now I will apply it on my lid area. Now at last I will take the
लाइटेस्ट ब्राउन शेड और मैं इसे अपने ट्रांजिशन शेड के ऊपर अप्लाई करूंगी, जिससे मेरा आई लुक बहुत ही प्रिसाइज और हाईलाइट होके दिखे. एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू अगेन टेक दिस ब्लेंडिंग ब्रश, द फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश, एंड टेकिंग द लाइटेस्ट ब्राउन शेड and dusting off the excess, and I'll apply it right here above my transition shade. और अब हम चलते हैं अपने बेस मेकअप की तरफ. मैंने वो शेड अप्लाई कर लिया एंड दिस इज हाउ माई आई मेकअप लुक्स राइट नाउ. और हम इसमें कोई भी ग्लिटर शेड अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज इट्स द सॉफ्ट लुक एंड आई डोंट वांट दैट ग्लिटरी थिंग टू कम. So I'm going to use this Maybelline Fit Me Matte Flawless Fit Me Foundation. I'm in the shade 125 Nude Beige, and I'm going to take a little amount of foundation, and I will take this foundation on the back of my hand, dot this foundation all over my face with the help of my finger. So now with the help of a blender, I am going to blend all of this foundation, and I'm just going to blend it. So guys, आप भी बता सकते हैं कि आप कौन से वीडियोस चाहते हैं जो मैं करूँ मेकअप में, फूड चैलेंजेस, मेकअप चैलेंजेस. आप अपनी चॉइस भी बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू डू जो आप बोलेंगे. और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, बट आप जो पहले बोलेंगे मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो पहले करूँ. सो यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. और मैं बहुत इंटरैक्टिव ऑडियंस चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ आऊँ और अपना अपना बताऊँ और मैं चली जाऊँ. नहीं, इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू सम वीडियोज़, आई विल डू इट फॉर यू गाइज. सो प्लीज़ लेट मी नो कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ या कोई पर्टिकुलरली मेकअप लुक करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं. मैं आपके चैनल पर ज़रूर करना पसंद करूँगी. इससे पहले भी मैंने एक रिक्वेस्टेड वीडियो किया जहाँ पे मैंने ब्लैक स्मोकी आई की थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे कोई रिक्वेस्ट करता है. आप मुझे केपेबल समझते हैं कि आप मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंसीलर, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ द Maybelline Fit Me, and for that I'm going to use this Maybelline Age Rewind Concealer. I'm in the shade 122 Sand. Just roll on and you are done. Now I'm going to set my under eye with the help of this loose powder. I'm going to use this Maybelline Fit Me Loose Powder in the shade Light 15, and I'm going to take it on my beauty blender. That's good. Now it's time to use the bronzer, and for the bronzer I'm going to use the Sugar Bronzer in the shade 01 Top It Topper. मैं हमेशा ये वर्ड बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ, और मैं गलत भी बोल रही हूँ तो क्या, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगी. नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो सही करता है ना. I'm going to take a little amount of bronzer, cutting up the excess, and now I will just bronze up my face. Press this brush like this, and now I will apply the bronzer on my nose. और मैं इसे इस तरीके से अपने आईब्राउ से कनेक्टेड रखूँगी जिससे वो अलग ना दिखे. भी मैं इसे ब्लेंड करूँगी. So now after bronzing up my face, I'm going to fill my lower lash line, and for that I'm going to take this pointed fluffy brush, and this is from Vega, and I'm going to take the lightest brown shade that I used as my transition shade. I'm going to take this shade on my brush, and I will connect it like this. Now after doing my lower lash line, I'm going to use this kajal, and I'm using this Faces Canada's magnetized kajal in the shade Jet Black, and I'm going to apply it on my waterline. So I have applied kajal on my waterline. Now I will be doing my eyebrows, और आज eyebrows के लिए मैं अपनी आई शेडो पैलेट का यूज़ करने वाली हूँ. और मैं आज ये वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास आईब्राउ प्रोडक्ट नहीं है तो आप अपने आईब्राउ के शेड के अकॉर्डिंग, आपके जो आईब्राउ हेयर का शेड है उस अकॉर्डिंगली आप अपने आई शेडो पैलेट में से कलर चूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी आई शेडो पैलेट के हेल्प से अपनी आईब्राउ फिलअप कर सकते हैं. सो आई विल टेल यू कि कैसे. सो मैं अपनी ये ब्यूटी ग्लेज गॉर्जियस में पैलेट से ये वाला शेड उठाऊंगी. दिस शेड यू कैन सी दिस डार्क ग्रे शेड, और मैं इसे अपने एंगुलर ब्रश पर लूँगी, एंड आई एम गोइंग टू टेक दैट शेड and I will just fill up the gaps between my eyebrows.
I'm just going to brush out the extra product. तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी आईब्रो करना पसंद करते हैं. कई लोगों को अपनी आईब्रो पूरी ड्रॉ करनी पसंद होती है, बट मुझे ओवर ड्रू करना नहीं पसंद है. आई जस्ट like to fill up the gaps between my eyebrow hair. So after doing my eyes and my eyebrows, let's move on to the blush. And for the blush, I'm going to use a lipstick. So अगर आप मेरे Instagram पे वीडियोस देखते हैं या आप मेरे मेकअप वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपको पता है कि मैं अपनी लिपस्टिक को एज अ ब्लश भी यूज़ करती हूँ और आप भी कर सकते हैं. सो आज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मैं लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ, नायका लिक्विड लिपस्टिक, उसे मैं एज अ ब्लश भी यूज़ करूँगी. सो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बस मेक श्योर टू ब्लेंड इट प्रॉपरली. सो आई विल टेल यू कि हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस डार्क लिपस्टिक एज माई ब्लश. सो बेसिकली मैं बहुत ही कम अमाउंट का प्रोडक्ट लूँगी और मैं इसके एप्लीकेटर से सिर्फ डॉट कर लूँगी लाइक दिस. मैं इसे ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी और इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्लेंड करिएगा, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक बहुत ईजिली ड्राई हो जाती है कई, और ये वाली तो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है. इसलिए मैं इसे बहुत जल्दी ब्लेंड कर रही हूँ. जस्ट लुक एट दिस, ये प्रॉपरली ब्लेंड हो गया है और मैं जो भी लेफ्ट ओवर है मेरे ब्लेंडर में, मैं उसे अपने नोज पर अप्लाई कर ले रही हूँ. सो आज की वीडियो में मैंने दो ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आप किसी और प्रोडक्ट से भी वो चीज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ आईब्रो. आप अपनी आईब्रो अपने आई शैडो पैलेट से भी कर सकते हैं. एंड सेकेंड इज़ टू अप्लाई लिपस्टिक एज अ ब्लश. और ये मैं अपने बहुत से वीडियोज़ में करती हूँ, बट आई जस्ट थॉट चीज़ बता दूँ कि आप दूसरी चीज़ों से भी अपना मेकअप कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव ब्लश, कोई दिक्कत नहीं है, लिपस्टिक तो होती है सबके पास. यू जस्ट हैव टू जस्ट डॉट दिस लिपस्टिक एंड जस्ट अप्लाई इट. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द लिपस्टिक. आई एम गोइंग टू यूज इट वेरी केयरफुली, क्योंकि ये लिपस्टिक का एप्लीकेटर बहुत 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 ट्रबल देता है मुझे, क्योंकि मेरे टीथ पे लग जाता है या मैं अपनी लिप्स ओवरलाइन कर लेती हूँ. सो आई वांट टू डू इट केयरफुली. So after applying lipstick, I'm going to apply highlighter, and I'm going to use this LA Colors palette in the shade Peaches and Cream, and I'm going to take my highlighter brush and taking this shade and applying it on the highest points of my face. And also don't forget to हाईलाइट योर इनर कॉर्नर्स, क्योंकि वो आपके पूरे आई लुक पे एक ऐसे जान से डाल देते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट. After highlighting my face and inner corners, now let's do mascara. And for that, I'm going to use this Maybelline Lash Sensational Mascara. This mascara gives so much volume to your eyelashes. I think Maybelline mascaras are the best, like best. मैं शायद अपने वीडियो में बहुत बार बोल चुकी हूँ ऐसा, बट कंपैरिजन नहीं है कोई. Maybelline mascaras are the best. So आप देखिए, मैंने सिर्फ इसमें वन कोट अप्लाई किया है, एंड लुक एट द डिफरेंस. So now after doing everything to keep this makeup in place, let's fix our makeup using this Faces Canada Ultime Pro Makeup Fixer. I'm just going to spray it and keep my makeup in place. And let it set, and I will be right back. That's good. So guys, that was all about this video where I created this monochromatic brown makeup look where I did brown eyes, brown cheeks and brown lip. So this is called a monochromatic makeup look. Please let me know in the comment section how you like this look. And as you all know the drill, what to do, you have to like this video, subscribe to my channel if you haven't, press the bell notification so whenever I'll post a video, you will get notified. You can also follow me on my Instagram. My Instagram handle will be linked down in the description box. I will see you all in my next video. Till then, see ya. Bye.